तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के बारे में। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इन अ वेरी सिंपल मैनर थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो दोस्तों, इस फ्लो चार्ट के द्वारा आप थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के बारे में बहुत ही आसान तरीके में जान सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छे से समझ आएगा। ओके, with the help of this flowchart you can easily understand about the thyroid hormone synthesis in a simple and easy manner. Okay, so let us start the video. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में हम कितने प्रकार के स्टेप्स देख सकते हैं, देखिएगा। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस? दे आर आयोडीन ट्रैपिन, पहले आता है आयोडीन ट्रैपिन, देन नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, देन नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। सो पहले आता है आयोडीन ट्रैपिन, देन नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, देन नेक्स्ट क्या आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। ओके, सो फर्स्टली आयोडीन ट्रैपिन, देन नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, then next coming to oxidation of iodide, then next iodination of tyrosine। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड के बाद में क्या आता है? आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। ओके, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन के बाद कौन सा स्टेप आता है? कपलिंग ऑफ T1 एंड T2। ओके, देन कपलिंग ऑफ T1 एंड T2 के बाद कौन सा स्टेप आता है? पाइनोसाइटोसिस and digestion of colloid. Okay, then what type of step we can also after coupling of T1 and T2? That is pienocytosis and digestion of colloid. Okay, then next what step we can observe? That is secretion of thyroid hormone. Okay, so next क्या आता है? secretion of thyroid hormone। pienocytosis के बाद कौन सा स्टेप देख सकते हैं हम? secretion of thyroid hormone। Okay, देन नेक्स्ट थायराइड हार्मोन सेक्रेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है? ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ओके, सो एक एक स्टेप को हम डिटेल और सिंपल तरीके में जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, ईच स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ डिटेल एंड सिंपल मैनर, सो प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आयोडीन ट्रैपिंग। तो दोस्तों, थायराइड सिंथेसिस में फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आयोडीन ट्रैपिंग। ओके, आयोडीन ट्रैपिंग में क्या आता है, देखिएगा। सो फर्स्टली through the blood the iodine is trapped into the thyroid gland. Okay, so from the blood iodine is trapped into the thyroid gland. Thyroid gland consists of follicular cells. Okay, so from the blood to the thyroid gland the iodine is trapped. Okay, from the blood iodine is trapped into the thyroid glands. Okay, so ATP is used in this process, so it is a type of active transport. Okay, blood के द्वारा from the blood iodine moves into the follicular cells lumen. So from the blood iodine is trapped into the follicular cells lumen. Okay, so this is the first and most important step. As you know, iodine is the main constituent of the thyroid hormone. Okay, then next moving to the next step, that is synthesis of thyroglobulin. Okay, firstly iodine is trapped into the follicular cells lumen of thyroid gland, then nextly coming to the synthesis of thyroglobulin. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। follicular cells synthesizes thyroglobulin. So this thyroglobulin is synthesized by follicular cells. Okay, so the follicular cells rough endoplasmic reticulum produces a large glycoprotein. Okay, this glycoprotein is modified in Golgi bodies and released as thyroglobulin through the exocytosis. Okay, so यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फॉलिकुलर सेल का ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो पहले एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। वो लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन गोल्गी बॉडी में मॉडिफाई होता है। फिर गोल्गी बॉडी में ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉडिफाई होने के बाद एक्सोसाइटोसिस के द्वारा थायरोग्लोबुलिन की तरह रिलीज होता है। ओके, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो डन साइमल्टेनियसली। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, एफ सेल्स आर द फॉलिकुलर सेल्स एंड देन RER आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन नेक्स्ट GB इज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड देन नेक्स्ट GB इज द गोल्गी बॉडी एंड
Then next TGB is nothing but thyroglobulin. Okay. So next coming to the oxidation of iodide. Okay. So यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? Okay, what is the reason behind the oxidation of iodide? The iodine which is trapped into the follicular cells of thyroid gland need to be binded with the thyroglobulins tyrosine. Okay, this iodine needs to be react with the tyrosine of the thyroglobulin. Tyrosine is one of the amino acid of thyroglobulin. So the negatively charged iodide cannot be react with tyrosine of the thyroglobulin. Okay, so ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयोडाइड है वो टायरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता है, इस कारण ये आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है. ओके, so the negatively charged iodide molecules cannot react with tyrosine of thyroglobulin. Okay, so this is the reason why oxidation of iodide is done. Okay, what happens here? So the negatively charged iodide ions together forms iodine molecules. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है? ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयोडाइड आयॉन्स एक आयोडीन मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं. ओके, so the formed iodine molecule can bind with the tyrosine of thyroglobulin. Okay, so by this we have completed the 3 steps. Then next coming to the 4th step. Okay, then coming to the next step, that is iodination of tyrosine. Okay, so what is tyrosine here? Tyrosine is one of the amino acid of thyroglobulin. Okay, so this tyrosine is get iodinated. Okay, so how it will get iodinated? Amino acid of thyroglobulin, that is tyrosine. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा. Binding of one iodine atom to thyroglobulin forms T1, that is monoiodotyrosine. Okay, and second iodination, that is binding of one more iodine atom to the thyroglobulin produces diiodotyrosine. Okay, one iodine atom with thyroglobulin forms T1 and iodine molecule, that is I2, with thyroglobulin forms T2, that is diiodotyrosine. Okay, then next this T1 and T2 get accumulated and stored in the lumen of the thyroid follicular cell. Okay, so what will happen here? The T1 and T2 formed here will get accumulated and stored in the lumen of thyroid follicular cell as colloid. Okay, I think the topic is clear up to here. Then next moving to the next step. Okay, टायरोसिन का आयोडीनेशन होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा. Coupling of T1 and T2. Okay, so what happens here? Two molecules of T2 and T2 together forms T4, that is tetraiodothyronine. Okay, and also T2 molecule along with T1 together forms T3, that is triiodothyronine. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, दो T2 मॉलिक्यूल्स मिलकर T4 फॉर्म कर रहे हैं. वो क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन है. और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक T2 मॉलिक्यूल T1 मॉलिक्यूल के साथ T3 हार्मोन को फॉर्म कर रहा है, T3 थायराइड हार्मोन को भी फॉर्म कर रहा है. उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन. ओके, सो बाय द कपलिंग ऑफ T1 and T2 thyroid hormones are forming here, that is T4 and T3 hormones. Okay, they are tetraiodothyronine and triiodothyronine. Okay, so this is about coupling of T1 and T2. Then next coming to the pinocytosis and digestion of colloid. Okay, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा. टायरोसिन का आयोडीनेशन होने के बाद T1 और T2 फॉर्म होते हैं. वो T1 और T2 फॉलिकुलर सेल्स में अक्यूमुलेट होते हैं. देन नेक्स्ट उस T1 और T2 का कपलिंग हो रहा है. कपलिंग होने के बाद थायराइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. देन नेक्स्ट आता है one of the most important step, that is pinocytosis and digestion of colloid. Okay, so
अभी हमने देखा है ये जो T1 और T2 अक्यूमुलेट होकर फॉलिकुलर सेल में ही रहते हैं, उसे हम कोलाइड कहते हैं। इसी कोलाइड का यहाँ पर पाइनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन हो रहा है। ओके, ये कोलाइड फॉलिकुलर सेल्स के ल्यूमेन में प्रेजेंट है। सो पाइनोसाइटोसिस के सहारे ये फॉलिकुलर सेल्स में एंटर होता है। ओके, from the follicular cells lumen it gets enter into the follicular cells through the help of pinocytosis. Okay, so after pinocytosis the colloid merges with lysosomes. Okay, so due to the merging with the lysosome, the lysosomal activity is done here. Okay, this colloid get breaks. Okay, due to the lysosomal activity this colloid will get break. Okay, then next what happen here, the thyroglobulin consisting digestive enzyme will cleave the colloid into the T3 and T4 hormones and releases these hormones. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोलाइड लाइसोसोमल एक्टिविटी के कारण ब्रेक डाउन हो जा रहा है या डाइजेस्ट हो जा रहा है। इसके कारण T3 और T4 हार्मोन्स जो इसमें प्रेजेंट है वो रिलीज होते हैं। ओके, so this is about pinocytosis and digestion of colloid. Next, coming to the secretion of thyroid hormones. So secretion of thyroid hormone में हम क्या देख सकते हैं? So thyroid gland secretes T3 and T4 hormones into the blood by diffusion. Okay, through the help of diffusion, this T3 and T4 hormones get secreted into the blood. Okay, so यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा ये T3 and T4 hormones ब्लड में secrete हो रहे हैं। Okay, so why only diffusion? Because this T3 and T4 are lipid soluble. ये T3 और T4 lipid soluble होने के कारण यहाँ पर diffusion हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मोस्टली T4 इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। ओके, मोस्टली T4 इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। अधिकतर T4 हार्मोन ब्लड में सेक्रेट होता है मोर देन T3। T3 से भी ज्यादा T4 ब्लड में सेक्रेट हो रहा है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। बट T3 इज मोर पोटेंट देन T4। ओके, T4 से भी ज्यादा पोटेंट T3 हार्मोन है। ओके, T4 से भी ज्यादा पोटेंट यहाँ पर T3 हार्मोन है। सो ड्यू टू दिस रीजन T4 इज गेट कन्वर्टेड इनटू T3। ये T4 हार्मोन जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग वन आयोडीन। एक आयोडीन को लूज करने पर ये T3 हार्मोन फॉर्म कर रहा है। ओके, सो T3 ज्यादा पोटेंट होने पर ये T4 एक आयोडीन को लूज कर T3 फॉर्म कर रहा है। दिस T4 हार्मोन बाय लूजिंग वन ऑफ द आयोडीन इट फॉर्म्स T3। ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट स्टेप, that is transport in the blood. So coming to the last step, that is transport in the blood. 99% of T3 and T4 hormones get combined with a transport protein in the blood known as thyroxine binding globulin, TBG. So this T3 and T4 get combined with TBG and transports in the blood. By that the thyroid hormones get transported in the blood and reaches wherever they are necessary. By the help of blood the thyroid hormones are get transported and the actions of thyroid hormones are regulated. Okay, so by this we have completed the thyroid hormone synthesis. Okay, so firstly iodine will be trapped into the follicular cells from the blood by the active transport. Then simultaneously follicular cells forms thyroglobulin and the iodine which is trapped from the blood get oxidized and forms iodine molecules as negatively charged iodide cannot bind with the tyrosine. Okay, then next here iodination of tyrosine will take place. Then iodine along with thyroglobulin forms T1 and T2. If one iodine atom get binds with thyroglobulin it forms T1 monoiodotyrosine. If
iodine molecule get binds with thyroglobulin, it forms diiodotyrosine. Then next, coupling of T1 and T2 will take place. Two T2 molecules together form T4 hormone, and one T1 and one T2 molecules together form T3. So what is T4 and T3 here are tetraiodothyronine and triiodothyronine. Okay. The next step is pinocytosis and digestion of colloid. So the colloid form here consisting of T3 and T4 hormones by the help of pinocytosis from the lumen of follicular cells get enter into the follicular cells, and by the lysosomal activity the colloid is break down and the T3 T4 hormones are get released into the follicular cells. Okay. Then next coming to the secretion of thyroid hormone. So ये T3 और T4 hormones thyroid gland से blood में secrete हो जाते हैं. So from the thyroid gland the T3 and T4 hormones are get secreted into the blood by the help of diffusion, because this T3 and T4 are lipid soluble. So by the help of diffusion they enter into the blood. One of the most important point here, that is mostly T4 is secreted into the blood but T3 is more potent. So due to this reason T4 will get converted into T3 by losing one of the iodine. Okay, so coming to the last step, that is transport in the blood. So this T3 and T4 hormone after secreted into the blood from the thyroid gland get transported in the blood through the help of TBG transport protein, that is thyroxine binding globulin. Okay, this is about thyroid hormone synthesis. अगर से आपको ये वीडियो जरूर समझ आया है, so please do like, share and subscribe to my channel. Okay, so this video is helpful for many of the medical students, those who are dealing with the human anatomy and physiology subject. Okay, so okay दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में.